Hello everyone and welcome back to my channel. In my last video, I spoke about a few things that you should keep in mind while you're working on your portfolio. Towards the end of it, I also said कि अगर किसी को मेरे साथ 101 सेशन चाहिए या किसी को अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो ये गूगल फॉर्म का लिंक है, इसको आप देखो, इसको फिल करो, अपना पोर्टफोलियो डालो एंड आई रिव्यू इट. विल हैव अ 101 session. I got around 35 to 40 applications for that. And I was going through all the portfolios only to realize that only around 10 portfolios were worth reviewing. मैं तो पोर्टफोलियो के लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हूँ. कॉलेज में कैसा प्रोजेक्ट हो रहा है, कॉलेज के बच्चे क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन सब का इंटरसेक्शन ढूंढ के फिर तुम अपने कीवर्ड्स फाइंड आउट करो. मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, बट मैक्सिमम लोगों की बेसिक्स ही क्लियर नहीं है. सो आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो एंड टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स which if you're doing, then your portfolio is not going to get reviewed. Trust me, these are very small things. इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो फिक्स करने में तुम्हें कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई दिमाग नहीं लगेगा. बहुत सिंपल चीज़ें हैं. सो वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड एंड try not to make these mistakes in your portfolio. Number one, you're not following the instructions clearly. अगर तुम्हें बोला अपना ईमेल एड्रेस दो तो डालो. अगर तुमसे फॉर्म में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट इज़ इट दैट यू वांट आउट ऑफ दिस सेशन, या फिर कोई और स्पेसिफिक तुमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आंसर देम विथ सम इंटेंट. अब देखो एग्जैक्टली इस तरह का फॉर्म तो सर्कुलेट नहीं होगा जब तुम अपना एग्ज़ाम दोगे ना, बट तुम्हें एसओपी तो लिखनी होगी. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तुम एनआईडी के एग्जाम में लिखोगे. आईडीसी में अप्लाई कर रहे हो और अप्लाइंग टू सम अदर कॉलेज, chances will be that you will be required to fill some sort of form. Especially IDC, IIT Bombay, you have to write a lot of things. So just don't do it just for the sake of कि हाँ बस लिख दिया कुछ. Do it properly, and it can be as simple as instructions to rename your portfolio. वो भी लोग नहीं करते हैं, उसको भी उसमें भी गलती कर देते हैं. Make sure whatever instructions you are getting, you're following them प्रॉपरली. उसको अच्छे से किसी रीज़न से उन्होंने तुम्हें वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को दिया है. And following these instructions and doing things properly is more of a habit. If you did not do it so properly in the form that I circulated, it's less likely to be an accident, but more likely to be a habit. So try to make it a habit टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस. अगर तुम किसी के पास जा रहे हो, अभी अगर तुम मेरे पास ही आ रहे हो कि हाँ आप मुझे अपना टाइम दो 101 सेशन के लिए, देन एटलीस्ट फिल द फॉर्म दैट आई हैव गिवन टू यू प्रॉपरली सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स कि हाँ दिस पर्सन इज सीरियस about this session. The same things will apply when you are applying for colleges also. उनके तो बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं यार. उनके तो आपको बहुत ध्यान से फॉर्म भरने पड़ते हैं. तो मेक श्योर प्लीज़ मेक श्योर दैट इफ़ द इंस्टीट्यूट और एन ऑर्गेनाइजेशन यूर अप्लाइंग विद, they have asked you to fill some form, you're doing it very nicely, you're doing it very properly. थोड़ी उसमें मेहनत लगा के, एफर्ट लगा के वो कर रहे हो. पॉइंट नंबर 2, क्या आपका पोर्टफोलियो एक गूगल ड्राइव लिंक है? क्या आपने अपने इंटरव्यू को उसका एक्सेस दिया है? आई गॉट नॉट सो मैनी, बट किसने अगर मेरे साथ वो गूगल ड्राइव लिंक शेयर किया है उसका मुझे एक्सेस ही नहीं दिया है. सी, आई एम स्टिल रिव्यूइंग अराउंड 40 पोर्टफोलियोज. ठीक है, आपके प्रोफेसर्स वगैरह आपका पोर्टफोलियो देखेंगे ना, देन योर्स नॉट द ओनली पोर्टफोलियो दैट दे हैव टू गो थ्रू. दे हैव मे बी अराउंड hundreds of portfolios to go through. ठीक है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होता है, बट लेट्स इमेजिन कि इतने उनको पोर्टफोलियो रिव्यू करने ही हैं. अब तुमने उनको एक लिंक दी है, उस लिंक को ओपन करते हैं. हाउ सैड विल इट बी कि अगर मुझे 100 पोर्टफोलियोज रिव्यू करने हैं एंड आपका पोर्टफोलियो मेरे सामने आता है एंड मैं उसके लिंक को क्लिक करती हूँ एंड मेरे को उसके व्यू एक्सेस ही नहीं है. मतलब बुरा नहीं लगेगा? मेरे को भी ऐसे कुछ पोर्टफोलियोज़ मिले थे, मैंने रिक्वेस्ट एक्सेस कर दी बिकॉज आई एम नाइस एंड काइंड, बट आई कुड ईजिली जस्ट नॉट वरी अबाउट इट एट ऑल एंड उसको एग्जिट करके मैं मूव ऑन करती नेक्स्ट पोर्टफोलियो पे. जस्ट ध्यान रखो कि अगर तुम अपना लिंक डाल रहे हो गूगल ड्राइव पे, तुमने कुछ पोर्टफोलियो अपना डाला है, उसका तुमने एक्सेस दिया है कम से कम. नंबर 3, आपने यूनिक बनने के चक्कर में बहुत ही ऊट पटांग सी कोई वेबसाइट ले ली है एंड यू आर यूजिंग दैट वेबसाइट टू मेक योर पोर्टफोलियो. प्लीज़ डोंट डू दैट. द वे यू कैन स्टैंड आउट इज़ मे बी by
showing the kind of projects that you have done. You can literally do that using a PDF. Please, जो आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे ना, उनकी ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाओ, उनकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान रखो. डोंट यूज़ सम रैंडम वेबसाइट जहाँ पे तुम क्लिक करो तो पहले तो तुम्हें कोई कुकीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ जा रही हैं, या यू नो आई एम रिक्वायर्ड टू लॉग इन, मेक एन अकाउंट टू व्यू वॉट यू हैव डन. डोंट, प्लीज़ इतना कॉम्प्लिकेट मत करो लाइफ को. कीप इट वेरी सिंपल. इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ PDF, use Behance or use GitHub. Some people use Notion. Whatever it is, do not use some very complicated, weird, never heard of it before sort of a website just because you want to be cool. I've seen some people use Issue to showcase their portfolios. I mean, Issue का समझ आता है if you're using it to show some publication work. But अगर तुम अपना पूरा का पूरा portfolios पे दिखा रहे हो, पहली बात तो वो portrait orientation में होता है, and then you see two portraits side by side. Until and unless it is really serving a purpose or it is really solving something for you, for your portfolio, don't use it. Please don't complicate your life or your reviewer's life. Number 4, you're not talking to me. Yes, what that means is कि तुमने अपने जो कॉलेज का ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा उठा के पोर्टफोलियो में डाल दिया. Sorry, but I am not going to go through 50 pages of your project report. When you put your entire graduation project in your portfolio and basically call your graduation project ka report a portfolio, you are not talking to this person who is sitting in this college where you want to go. वहाँ पे जो तुम्हारा पोर्टफोलियो रिव्यू कर रही है, you're not talking to them. You're still talking to your bachelor's वाले सर और मैम जो तुम्हारा वो रिपोर्ट चेक कर रहे हैं. If you're not putting the effort of curating the portfolio for the college that you're aspiring to be at, मतलब मैं फिर क्यों देखूँगी उसको. मेरे पास टाइम नहीं है टू गो थ्रू योर एब्स्ट्रैक्ट, योर ब्रीफ, योर इंट्रोडक्शन, वो तुम्हारा सारा जो तुमने अपने रिपोर्ट में लिखा है. आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट. क्यूरेट इट फॉर मी, टेल मी योर स्टोरी इन शॉर्ट. दैट इज़ द पॉइंट ऑफ अ पोर्टफोलियो. मुझे रिपोर्ट पढ़नी होगी, मैं बाद में पढ़ लूँगी. छोटा रखो, सिंपल. मेक माई लाइफ सिंपल प्लीज. Number 5, all pictures, no words. I've especially seen architecture students do that because they work on these renders and उनके पास बहुत सुंदर सुंदर visuals होते हैं and they just put that in the portfolio. क्या है, क्यों है, क्या story थी, ये क्यों बनाया. They have answers to everything but they just forget to put it in the portfolio. अपने प्रोजेक्ट को एक अच्छा सा नाम दो. Give it some nice name. Talk about what problem is it trying to solve. Number 6, Hi, I'm a UI UX designer. I've seen some portfolios जिसको तुम खोलोगे and these portfolios are very typical websites or very typical Behance pages जो कि चिल्ला के बोल रहे हैं कि मैं एक UX UI designer हूँ. अगर तुम ऑलरेडी एक UX UI designer हो, तुम्हारा ऑलरेडी एक करियर बन चुका है, मतलब तो तुम ये मास्टर्स क्यों करना चाहते हो. आई एम नॉट सेइंग कि जो ऑलरेडी UX UI की जॉब में हैं वो मास्टर्स नहीं कर सकते, बट यू मस्ट हैव अ गुड रीज़न फॉर दैट एंड दैट रीज़न, sorry darling, but it's not reflecting on your portfolio. Your portfolio for an academic institution cannot be like a portfolio for a job. If the first thing that I'm seeing on your website or on your Behance right after your name is that you're a UX UI designer and not a learner or not a creative person or not something else, if you're telling me that that is the most interesting thing about you, then it's a little disappointing. I am sure there are a lot of other more interesting things about you, but that is not reflecting on your portfolio. So please उन चीज़ों को थोड़ा सा ऊपर डालो. वो जो तुम्हारा जॉब टाइटल है करंट, उसको थोड़ा सा साइड कर दो, स्पेशली फॉर एन एकेडमिक portfolio. Now I'm not saying that if you're a UX UI designer then वो disappointing and there is no chance of you to
get your portfolio reviewed or come out as an interesting person. I reviewed one of the I looked at one of these girls portfolio who only has UX UI projects on her portfolio, but the way she worked around it was so beautiful. She participated in the Microsoft Design Challenge 2022, but the way she told her story, or with the depth that she worked on that project, the kind of solutions that she came up with. Also, she was from an engineering background, so she brought up those skills in the picture. सब कुछ mix करने के बाद, the project that she came up with was actually very nice. So I'm not saying कि सारे UX UI projects in design colleges के लिए बुरे हैं. All I'm saying is कि make sure that even if you're doing a UX UI project, उसमें depth है and it is somehow relevant to the course that you're applying for. Number 6, your projects are labeled as logo project, poster project, illustrations, artworks. Okay, artwork is not a project. Artwork is something that you're creating. Illustration is something you're creating. Digital painting, 3D artwork, all those things. ये सब in a way तुम्हारे skills हैं. Skill showcase can be a part of your main project. अगर तुमने कोई painting बनाई है, if you worked on some 3D modeling sort of a thing, how is it relevant to the department you're applying for? If you're applying for communication design and if you've made a painting, how is it relevant to communicating some ideas? Did you want to communicate any ideas in the first place? Or are you just trying to show कि hey, look, I can work with acrylics and I can draw? Chances are that you did have some ideas. तुम्हारे पास होगा कोई रीज़न कि तुमने वो पेंटिंग को पोर्टफोलियो में डाला है. वो रीज़न शो करो. Maybe give that painting a nice name, make it a part of a bigger project rather than just अपनी 15 पेंटिंग्स को एक ही स्क्रीन पे छोटे छोटे बॉक्सेस में डाल के उसको पेंटिंग प्रोजेक्ट नाम दे दो. Don't do that, please. Number 7, and maybe the last one for now, your portfolio is not telling me a story about you. तुमने लोगो डिज़ाइन का काम किया है, वो तुमने छाप दिया. एक पेज पे लोगो डाल दिया, दूसरे पेज पे दूसरा लोगो डाल दिया, तीसरे पेज पे पोस्टर डाल दिया. But why? How are these projects coming together to tell me a story about you, about who you are, and about who you can be if I give you the admission to this program? Show me your potential. And और मे बी अब मैं फिर से थोड़ा सी हाई लेवल पे बात करना है लग गई हूँ, बट ये भी चीज़ मेरे को बहुत मिसिंग लगी कुछ प्रोजेक्ट्स में. एंड मे बी दिस इज़ वाई यू शुड check out my last video where I speak about a few things you should keep in mind while you're working on your portfolio, because then hopefully you'll get a better idea of how to bring that sort of depth in your portfolio so that it's able to tell a nicer story about you. I'm really not an expert in portfolio making, but since I've been seeing a lot of portfolios in the past few years, I thought maybe I was in a position to talk about a few things जो कि पोर्टफोलियो में एब्सोल्युटली नो है. अगर मैं ही इन पोर्टफोलियोज़ को रिव्यू नहीं करना चाहती तो सोचो जो प्रोफेसर्स इतने सालों से पोर्टफोलियोज़ रिव्यू कर रहे हैं उनका क्या रिएक्शन होगा. इसको एक फ़िल्टर की तरह ही ले लो कि अगर यहीं से ही फ़िल्टर नहीं हो पा रहा है तो आगे तो और मुश्किल हो सकता है. ट्राई नॉट टू डू दिस मिस्टेक्स. दीज आर वेरी लिटिल स्मॉल सिली थिंग्स दैट वी डू. इसको थोड़ा अवॉइड करो. And keep working on your portfolio. If there's anything else you want me to talk about, next video किस topic पे होनी चाहिए, let me know in the comments. And if you're a design aspirant, then do not forget to subscribe, because I do make videos about design exams and design in general, my life as a designer. With that, ख़त्म करते हैं, काफ़ी लेट हो रहा है, and I'll see you in my next video. Bye.